I'll be discussing at first some basic terminologies about the statistics, basic background you can say about statistics. Then we'll jump into the main statistical part, main distribution part, and why we need that distribution. That will be discussed. Okay. So first you have to understand. In your last class, I have described what is population, what is sample. So what's the difference between population and sample? Population means I'm meaning the entire system. I'm meaning the entire object of interest. That is your population. Whereas sample is a part of the population. Okay. So if you are writing a sample space, that is your population total entire sample space. Suppose A, B, C, D. This is up to Z. Let's say. So this is your sample space, and what will be your sampling part? ABC will be the sampling plot, and the entire sample space you can consider as your population. Okay. Generally, we don't go for the population. What we do from the large data set, we generally take small data set for our computation purpose. Because if you are taking larger data set, then what will happen? The processing by the computers, processing by your CPU will take much time. Okay. So I'll be taking some sample. There are some criteria to select some samples. Okay, so sampling basically whatever the sampling you will be doing, that will be that will be fulfilling your objective. Okay. So let me give you an example of that. कहीं पे कोई competition होता है state level पे, consider it's a martial arts competition. Okay. So what we generally at first we do? First we generally go for the inter-district. Okay. Then we go for the interstate competition. So the person or the people coming from the inter-district portion, that's the sample of the inter-district. Okay. So if you are from district A and one person is representing district A, okay. So you have done a sample and you are saying, see, that guy is from that district, and it's representing, he is representing or she is representing that district in this competition, in this martial art competition. Okay, means sampling would be the characteristics. Sampling should be chosen in such a way that it represents the entire population. Okay. So parameters are associated with the population and statistics generally with the sample. So when I will be talking about the statistical term, when I will be talking the distribution, then I will be using the sampling. Now what's the difference between discrete and continuous variable? Discrete variables means that you can get these discrete variables by counting. Like what is the population number, or how many people generally are in Howrah district or in Kolkata. How many people are in Kolkata? So you can count it. Okay, and that will be your discrete variable. So there are a finite countable number of choices available with the discrete data. That is called the discrete variable. Like you cannot have 2.63 people in the room. So how many people are in the room? It should be 9, 10, 15. Okay, ऐसे रहेगा, finite number रहेगा, countable number रहेगा. You can have 2.63 people in the room. What are the continuous variable? The continuous variables are usually obtained by measuring. Like you are measuring length, or you are measuring weight, or you are measuring time. That can be expressed in fraction also. So for example, x could be in between a 63.5 greater than equals to, okay, less than 64.5. So when I will be presenting your variables in this format, in decimal format, then you can consider it's a continuous variable. You got my point? So discrete variables are usually obtained by counting. Continuous variables are usually obtained by measuring. So how many types of sampling are there? Generally I will be considering the 4 types. One is the random one. Most of the cases will be having the random sampling condition. Systematic one. Okay. Convenience, cluster, and stratified. Total 5 types. So what do you mean by random sampling? Random sampling is analogous to, there is an example given here that
in a hat, suppose you on a sheet you have written several name of your friends, okay, and you put that names or that sheets in this hat, okay. Suppose this is the hat. जैसे कि मैजिशियन को जादू दिखाता है ना उस टाइम पे कि नाम रख दो, जिसका नाम आएगा वो वॉलंटियर करेगा, ओके. एंड नाउ यू आर सिलेक्टिंग वन चीट, वन piece of paper you are pulling out, and that will be, that sampling is called the random sampling. You don't know किसका नाम आएगा, क्या होगा, कुछ भी हो सकता है. That will be your random sampling. So here they have given an example that analogous to putting everyone's name into hat and drawing out several names is called the random sampling. First you pull out this sheet, then you pull out this sheet. That's called the random sampling, because I am not defining your actions by some equations or by some limitations. मैं बोल नहीं दे रहा हूँ कि जो वाइट वाला है उसको ही निकालो, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि जो ग्रीन वाला चीज है उसको निकालो, okay. Any cheat you are pulling out, it could be green, it could be white color, okay. So each element in the population has an equal chance of occurring. This point you have to understand, मतलब बहुत अच्छे से समझना होगा. What do I mean by that? So suppose there are 100 cheats are there of several colors, okay, and for the random sampling I will not see any color, anything I can pull out. So what are the chances of having this particular cheat, okay, जिसमें तुम्हारा नाम है, out of 100, what is the probability? Tell me. Total 100 cheats are there, and I'm pulling out one cheat जिसमें एक चीज में तुम्हारा नाम लिखा है, and tell me what is the probability of that. What could be the probability of that? 1/100, 100 में से एक होगा ना, ठीक है ना. Means everyone got a equal chance. Each of the cheats have a chances of 1/100, then 1/100. Okay, तुम अगर sum करोगे up to 100 times आएगा ऐसे. So अगर sum करोगे, sum of these probabilities will be having the value 1. So when I'll be presenting any theory or anything, so we'll be generally considering the random sampling. It requires that a complete list of every, and what's the criteria to have the random sampling? That a complete list of every element in the population be obtained. Means तुमको मालूम है तुम्हारा नाम है इसमें, and you know that a finite number of cheats are there, like 100 cheats are there. So it requires that a complete list of every elements in the population be obtained. What is the systematic sampling? In the systematic sampling, I am telling you that what you will be doing. Suppose you have arranged तुम्हारे घर के बाहर एक लंबा लाइन है, ओके, और किसी जॉब एप्लीकेशन सेंटर के बाहर और कहीं पे भी एक लंबा लाइन है, मूवी थिएटर के बाद एक लंबा लाइन है, and in the movie theater you are telling your staff, you are the in charge of that movie theater, and you are telling your staff that क्या करोगे तुम, each 10th person को तुम टिकट के लिए बुलाओगे. दैट्स द लकी ड्रॉ. कोई स्कीम होगा तुम्हारा, तुमने बोल दिया कि जो लाइन पे है 10th वाला जो पर्सन होगा उसको तुम अंदर बुलाओगे. मीन्स यू आर गिविंग प्रिविलेज टू 10th person in that queue, okay, in that line, okay. अब बहुत लंबा लाइन है. So what you are doing, you are only taking the 10th person from that. So you are doing one kind of sampling here. मैं क्या कर रहा हूँ, each 10th person को ले लूँगा. पहले मैं लूँगा, मान लो कि फर्स्ट वाले को मैं ले लिया, आफ्टर दैट 10th वाले को लिया, देन 20th वाले को लिया, देन 30th में जो खड़ा है उसको लिया. They are getting a chance to see that movie, okay, free of cost. Let's say क्या हुआ,
Okay, so this type of sampling is called systematic sampling. Or what, here one example is there. I don't want you to get confused. So whatever example I have presented, that's the systematic sampling, and the example presented here also the systematic sampling. That in the systematic sampling, the list of elements is counted off, that is kth element is taken. Okay. So you are doing this type of similar to lining everyone up and numbering of 1 2 3 4 1 2 3 4 etc. So what you are doing, suppose according to this example, let me explain this example. Okay, जैसे कि confusion ना हो, line पे सब खड़े हैं movie theater के बाहर, and you are making groups. Okay, so first group up to 10th you will be making group 1 2 3 4 up to 10. Okay, another group will be from here 1 2 3 up to 10. So this type of sampling is called systematic sampling. What do I mean by that? Means you are taking a portion by following some pattern. You are taking, or you are sampling the population by taking some measures. You have some pre-defined restriction and you are following that. That's called the systematic sampling. Other threes are very simple. That's the convenience sampling. Convenience sampling means it's very easy to do, but it's probably the worst technique to use. कन्वीनियंस टेक्निक सैम्पलिंग मीन्स जिसका डेटा तुम्हारा पसंद है. मैं सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ इसको. सो समटाइम्स यू विल बी हैविंग ए लार्ज डेटा सेट, एंड among that data set you will be seeing some points are not giving you the good result. So sometimes what we do, we generally neglect those points. जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है उस पॉइंट को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ. Sometimes we do in case of resistivity survey, we will be seeing like this curve, the data points will be following this curve, suppose, and this point or this data point is way off the chart. That means it's not matching up with the curve. ये थोड़ा सा offbeat है. So what we do, I'll be doing the convenience sampling. I'll be taking these points which are falling on this curve or near to the curve, and these 2 points, this point and these points, are neglected, and you shouldn't be doing that. You should check your field data, but sometimes you don't have any other options. In that condition you will be doing the convenience sampling. Got it? What is the cluster sampling? So cluster sampling is accomplished by dividing the population in several cluster or groups. Okay, means at some competition is there, some state level competition is there, okay, or some national level competition is going on, and you have grouped the people, or you have arranged some dormitories, suppose, for each of the state of India. Okay, so if you have arranged dormitories like that only, and what you are doing, you are dividing that group of dividing the entire participants. That's called the population. Entire participant in that example will be your population. So you are dividing the population into several groups according to their places of origin. Means कोई वेस्ट बंगाल से है उसको लिए डॉर्मिटरी नंबर 1, कोई राजस्थान से है उसके लिए डॉर्मिटरी नंबर 2, कोई झारखंड से है उसके लिए डॉर्मिटरी नंबर 3, ऐसे करके तुम डिवाइड कर रहे हो. दैट टाइप ऑफ सैम्पलिंग इज कॉल्ड द क्लस्टर सैम्पलिंग. और इसको टोटल मिला दोगे, इफ यू आर summing up all these participants, then you will be having the population. Okay, clear? Akhil, is it clear? कहाँ गया अखिल? In case of stratified sampling, here we are also dividing the people into some group depending on the characteristics. In the same example, mute your mic. Akhil, mute your mic.
अरे क्या कर रहे हो? Okay. What is stratified sampling? In case of that example, okay, that participant came for a national event, and what you are doing, instead of keeping them according to the places of origin, you are keeping them the sports they are taking, sports they are participating. Okay, like कोई बॉक्सिंग में है उसको एक डॉर्मिटोरी में रख दिया, कोई जेवलिन थ्रो में है उसको एक डॉर्मिटोरी में रख दिया. So when you are doing that, that's called the stratified sampling. So that's the basic difference between cluster sampling and the stratified sampling. So stratified sampling means the sampling, you are dividing the entire population into groups called strata. Okay. So this time it is divided depending on their characteristics, not by geographical. Okay. Now let's talk about the random variables. So a variable that may take off on a different values. I think you are familiar with the random variables. That it may have the different value depending on the outcome of some event. So in the AP statistics exam, there is an example. 1/5 of the class received 5, 1/3 of the class received 4, 1/6 received 3, 1/20 received 2, okay, and 1/3 received 1. So if you representing x of the score of a normally chosen student in the class, so x will be a random variable. So what are the values of x? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so it's called the random variable here. That means the variable that may take on different values depending on the outcome of some event. Now let's talk about the expected value. It also called the mean value. और इसको अच्छे से समझना कि expected value क्या है, mean value क्या है, कैसे calculate करता है from the probability. Okay, so how we generally calculate the mean or the expected value? It's called expected value or mean value. So ex can be represented as summation. Write this down क्योंकि इसका अभी यूज होने वाला है. ex equals to I equals to 1 to n xi pxi. That actually the mean value, right? Now let's solve this problem. Investing in Sharma Furnitures and Co has 60% chance. So probability is of here actually is represented in the percentage. Okay, so you have to always do it in the decimal way. You have to represent it in the decimal way. Okay, like you say it's 0.6 chance, okay, out of 1. So it has 60% chance of resulting in a 10,000 gain and 40% chance of resulting in a 3,000 loss. What is the expected value of investing Sharma Furniture and Co? शर्मा फर्नीचर कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू. एक्सपेक्टेड मीन्स मीन. एक्सपेक्टेड वैल्यू, मीन वैल्यू both have the same meaning, but in the statistics I'll be using expected term. Okay, so expected of that is that. Okay, got it. Now solve this problem. कैसे करोगे? What would be the expected value? E, let's say. बोलो रिया, कैसे करोगे इसको? बोलो क्लास. यस, ठीक है. कितना रिजल्ट आ रहा है? बोलो. $4,800. Okay.
क्योंकि मैंने लॉस बोला था इसलिए ये माइनस हो जाएगा। तो ये बेसिक है, अभी हम लोग असली गेम में आएंगे, ठीक है, कुछ टाइम पे। Similarly, you can in a contest sponsored by these sodas, you have a prize if the cap of your bottle of soda says winner. Okay. Eager to win, you blow all your savings on sodas. तुमने जितने सारे सेविंग्स थे, जितने पैसे थे, सब दाव पे लगा दिया, and you have 0.05% chances of winning the prize money, 1% of winning 20,000, 90% of winning $10. Okay. Ignoring the money you spent on sodas, what is your expected value and the standard deviation? Standard deviation हम लोग पहले कर चुके हैं. So find out the expected value. Let me show you better. So what will be the expected value? 1 lakh, $1 million, right? It's $1 million into 0. This percentage, actually 0.05%. डिवाइडेड बाई 100 अगर तुम डेसिमल में करोगे तो, इसलिए ये आ रहा है. कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, एग्जाम में. सो यू आर मल्टीप्लाइंग विथ दिस, देन 20,000 विल बी मल्टीप्लाइंग जस्ट लाइक द प्रीवियस एग्जाम्पल एंड दिस विल बी द रिजल्ट. सो 709. नाउ व्हाट विल बी द वेरिएंस हियर? व्हाट विल बी द वेरिएंस? वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस कैसे निकालता है? टेल मी. फ्रॉम द मीन हाउ वुड यू कैलकुलेट वेरिएंस? समेशन 0 to n और 1 to n, whatever, 0 to n minus 1 और 1 to n. वेरिएंस कैसे निकालोगे? See this formula, xi pxi. If I do that, I equals to 1 to n xi square into pxi. ठीक है? What is the xi square? What is the, see, this is the x square minus ये बेसिक सा है, पहले मैं कर चुका हूँ इसको. सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू, इफ यू आर कैलकुलेटिंग ई एक्स एक्स स्क्वायर, ओके, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ई एक्स होल स्क्वायर. वही चीज़ मैं यहाँ पे किया हूँ. लिख लो इस फॉर्मूला को, मैं सही से लिख देता हूँ. इफ आई वांट टू फाइंड द वेरिएंस, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा रूट करोगे तो. सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू ई ऑफ बोलो, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर होगा. ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. सो ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैं अभी लिमिट नहीं लगा रहा हूँ, पी एक्स फ्रॉम दिस फॉर्मूला, ओके, माइनस ई एक्स होल स्क्वायर. तो इसको अगर करेंगे, लिख लो. सो व्हाट विल बी द सिग्मा स्क्वायर वैल्यू? ये माइनस ये ई का वैल्यू आया था हमारा, ई एक्स का वैल्यू आया था, ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 709 स्क्वायर. So they are your sigma square. So what's the standard deviation? Sigma equals to 22438. So your standard deviation is over $22,000 and
The expected value is 709. So what is the chance that तुम्हारा फ़ायदा ही होगा? What is the chance that तुम्हारा फ़ायदा होगा? चांस बहुत ही स्लिक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन भाई मतलब जो तुम खर्चा किए हो उसका मिडिल पॉइंट है 22,438. सो 20/222,000 डॉलर के आसपास तुम्हारा अगर रिजल्ट आता, मीन वैल्यू आता, then it might look nice, but there is a good chance that you will get not so good amount of money. So your value should be around 22,000. अगर 22,000 के आसपास आते तो तुम्हारा थोड़ा कुछ फ़ायदा होता और सही रहता. लेकिन if you from the mean value you are getting that is 709, the expected part. So expected part is very low, इसलिए you will not get a not so good amount of money. Is it clear to everyone? This portion clear to everyone? मैं ये वाला एक्सप्लेन किया था कि नहीं उस टाइम पे? Let me know. अरे बोलो क्लास, आज इतना साइलेंट क्यों? समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा. आया है कि नहीं? क्योंकि मैं अभी एग्जाम्पल आएगा उसको सॉल्व करना होगा तुमको, समझ लो. ठीक है. Now let's talk about the probability distribution. Okay. So there are in your syllabus multivariate distribution is also there, but I'm planning not to discuss this multivariate distribution. I'll be discussing 3 basic probability distribution. Later I will be discussing the probability distribution function, and okay, those are binomial distribution, Poisson's distribution, and you might have heard that the normal distribution. Okay, these 3 are there. Then you might ask that why we generally require distribution. We can do anything using the probability theory because we know the probability theory, we know everything, we can handle it. Okay, but let me tell you, sometimes you cannot, you will not, when it becomes a large amount or large volume of data, then you cannot find the probability, you cannot find the mean, you cannot find the variance easily. Okay, that's why we require distribution. Before discussing the distribution, I hope you remember what is n factorial, n into n minus 1, n minus 2 up to 1. What is the combination nck? Generally would denote by nck or nk like this way, like in this type of matrix format, matrix look like format, or nck format, whatever you prefer. So here they have used this format. So this is equals to nck. इसका मतलब क्या है? NCX. ये याद है ना? NCK means n factorial by k factorial in n minus k factorial. ये याद है? नहीं तो लिख लो अभी. Then I will be discussing the binomial distribution. Done? Okay? अभी थोड़ा जाग जाओ नींद से, जो भी सो रहे हो. अभी स्टैटिस्टिक्स का असली पार्ट पे आ रहे हैं. लिख लिया? ओके. Let's take an example. Let's you consider you are tossing a coin. Tossing a coin जिसका हेड एंड टेल है. हेड टेल को हम लोग कैसे लिखते हैं? एच टी. ओके. एंड you are tossing this coin 3 times. Suppose you are tossing this coin 3 times. So what will be the sample space? बोलो बोलो, मैं लिखने के लिए तैयार हूँ. बोलो. What will be the sample space here? Class? 8. मैं लिख नहीं पा रहा हूँ. H
देन बोलते जाओ एच एच टी, लेट से पहले एच वाला कंप्लीट करते हैं, एच टी एच, ओके, देन टी एच एच, ओके, देन एच टी टी, ओके, बोलो उसके बाद क्या रह गया, टी एच टी, ओके, देन टी टी एच, देन टी टी टी. Now if I ask a question कितने आया, 2 to the power q, how many elements will be there, total 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है. So if I ask you that find me what's the probability of having two heads together, having two heads as your outcome in this sample space, what's the probability of having two heads consecutively, मीन्स एच एच आने का चांसेस कितना है, एच एच एक साथ आने का कॉन्जिक्यूटिवली, टू हेड्स आने का चांसेस कितना है. सो हाँ, पहले मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ मैन्युअली. सो एक है तो तीन, तीन ही तो है, और कहाँ पे दिख रहा है. So the probability will be of this, okay, two head is equals to 3/8. कर लिए, अब इसको याद रखो. Now tell me if you do like, ये तो कर दिए, मैंने बोला कि same thing not 3 times, same example you are doing it's 10 times, the toss you are doing 10 times, and how many times you will have HH, how many times you have two consecutive heads, how many times कर पाओगे, देख लो. What will be the sample space here, how many elements will be there in the sample space, first let me first tell me how many elements will be there in the sample space, कितना रहेगा, टू टू द पावर 10, मतलब 1024 आएगा. सो इट विल बी अराउंड 1024 एलिमेंट्स तुमको लिखना है, एच 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 एच, मतलब 10 टाइम्स, राइट. देन ये करने जाओगे तो तुम्हारा 2 दिन बीत जाएगा, जाएगा कि नहीं. फॉर दिस पर्पस एंड इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज द चांसेस दैट 5 एज आर, this time I am asking for 5 consecutive age. So what are the chances that you will be having 5 age, how many times you will be having, what is the probability of having 5 age. So कैसे करोगे, ये करने जाओगे तो मैन्युअली जैसे पिछले एग्जाम्पल किया, यू विल बी, मतलब यू विल बी वेस्टिंग योर 2 days और 3 days टाइम, उसके बाद भी गलत करोगे अगर मैन्युअली करने जाओगे तो. बिकॉज यू हैव टू अरेंज, यू हैव टू राइट 1024 एलिमेंट्स लाइक दिस वे. फॉर दिस पर्पस वी जनरली यूज डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसका काम समझ में आया कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इस थ्योरी का, प्रोबेबिलिटी का, वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे. विल बी कैलकुलेटिंग द मीन, विल बी कैलकुलेटिंग द वेरिएंस, क्योंकि ऐसे कि मीन वेरिएंस निकालने जाओगे तो काम तो बन गया. फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डिस्कसिंग, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन द कॉइन एग्जांपल दैट आई विल एक्सप्लेन. ओके, फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन आई विल बी डिस्कसिंग, दैट इज राइट दिस डाउन. जो भी मैं बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ वो लिखते चले जाओ. binomial distribution, it's called the binomial distribution. You might have read this binomial distribution in your school mathematics class. Okay, you remember this formula, I hope so. So what happened in the binomial distribution, when you will be doing the binomial distribution, when you will be using the Poisson distribution, when you will be using the normal distribution, who will decide what to do?
So the sample space behavior basically decide which distribution you will be applying. The sample space behavior actually determine which distribution you will be applying. How? Let me tell you. So for the binomial distribution, when I will be applying the binomial distribution, first of all, when write this down, all the trials are independent. When all the trials are independent, then you will be doing the binomial distribution. Means when you are tossing a fair balanced or fair coin, ये टर्म यूज करते थे हम लोग प्रोबेबिलिटी में. When you are tossing a fair coin, then what will happen? हेड आएगा टेल आएगा, तुम्हारा हाथ में नहीं है, ठीक है. और when you are rolling a die, हेड आएगा टेल आएगा, तुम्हारा हाथ में नहीं है. पहले इसको कॉइन से समझते हैं, फिर बाकी एक्सप्लेन करेंगे. Why coin? There is a reason behind that. So all the trials are independent. In that condition, you will be using the binomial distribution. First one. Second one, the number, total number of the elements n should be finite. Okay. The number should be finite. Okay. Third point is, that's very important here. That's the key difference between the binomial and Poisson. The probability P of success is same for each trial. ये समझ में आया? Probability P, write this down. The probability P of success is same. इस पॉइंट को याद रखना और समझना, क्योंकि पॉइजन में फिर से डिस्कस करेंगे. ऑफ each trial. What do I mean by that? Means जब मैं टॉस कर रहा हूँ किसी कॉइन को, what are the chances of having heads? सक्सेस मीन्स क्या? एक चीज़ आने का चांस कितना है. ये टोटल इवेंट्स है, तो इसमें इसका कितना चांस है. ओके, दैट चांस इज कॉल्ड सक्सेस हियर. ओके, दैट्स द स्टैटिस्टिकल टर्म यू कैन से. एंड what is the probability of success is same of each trial. So if I talk about this fair coin for example, and here the probability of having heads, what is the probability of having head? What will be the probability if you are tossing a coin one time, let's say? What is the probability of having head? 1/2. 1/2. Every time you have a probability 1/2. दो में से एक आएगा each trial, and this 1/2 is same for each trial. जितने भी टाइम करो हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 ही रहेगा. That's the key point deciding that I'll go with the binomial distribution. One fair example is coin. Okay. Now binomial distribution. So these are the 3 points you should consider when you will be choosing for binomial distribution. कि तुम्हारा जो इक्वेशंस है, तुम्हारा जो प्रॉब्लम्स है, इसमें फिट होता है कि नहीं. ओके. नाउ लेट्स write down the probability of x, P of x equals to, it's a capital P, NCX. NCX, I hope I don't have to explain it. P to the power x, Q to the power n minus x. लेकिन what I will be doing, इस पॉइंट को याद रखना. इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और एक बार पॉइजन के टाइम पे. इट्स स्मॉल p, P to the power x, Q to the power n minus x. Where, write this down, where P plus Q equals to 1, P equals to 1 minus Q.
नाउ रिमेंबर दिस प्रॉब्लम जिसमें मुझे 3/8 का रिजल्ट मिला. ओके, दिस प्रॉब्लम यू रिमेंबर. यहाँ से मैन्युअली हम किए थे, इसको आप करते हैं वाया बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको लिख लो अच्छे से. So same problem, what will be the n value here? That time I told you that I am tossing 3 times and 8 elements you are having in your sample space. So what will be the value of n here and what will be the value of x? And I also asked that what are the chances of having 2 consecutive h? 2 इवेंट में एच आने का चांसेस कितना है. ओके, सो व्हाट विल बी द एन हियर? हाउ मेनी टाइम्स आई एम डूइंग द टॉस? बोलो. बोलो क्लास. 3 times. Okay. Now probability of head P equals to half. Q will be also half. Is it clear to everyone? क्योंकि हेड आने के चांसेस है हाफ, और Q का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस हाफ करोगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा. मतलब हेड नहीं आने का चांसेस कितना है, वो भी हाफ है, 50-50. ओके, सो इफ आई राइट दिस फॉर्मूला इन दिस फॉर्मेट, then P x, in this case x will be 2. Okay, P2 equals to, in place of n I'll be putting 3C2. okay, half to the power x का वैल्यू आया स्क्वायर and q का वैल्यू also half to the power in is 3 minus x is 2. 3C2, what will be the value of 3C2? 3 factorial divided by, बोलो, मैं ऐसे मैथ क्लास नहीं करूँगा, बोलो क्या होगा. 3C2 की, यस, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/4, ये आ जाएगा 1/2. सो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1/8. इसमें लिखने में बहुत तकलीफ हो रहा है. ठीक है, सो द रिजल्ट वुड बी अराउंड 3/8. ठीक है, इसको आप मुझे ना एक्सप्लेन करना पड़े. पिछले बार भी कितना मिला था मुझे, 3/8 ही मिला था. ठीक है, नाउ सॉल्व दिस सेम प्रॉब्लम, और मैं किसी को भी पूछूंगा इसको सॉल्व करने के लिए. व्हेन फॉर दिस केस, सपोज you are tossing 10 times, okay, and what are the chances of having this out of the 10 times? Means h 5 consecutive heads. What will be the chances, what will be the probability of having 5 consecutive heads? Now tell me, क्या करोगे? Ten times you are tossing, what are the chances of having 5 consecutive heads? So in that case, what will be the n value, class? What will be n value? Will be 10, and x value will be 5. okay, p will be, p का कितना वैल्यू आएगा, स्मॉल p 1/2. ओके, एंड q will be 1/2. करो, यहाँ पे पुट करो, पुट इट हियर,
and let me know the result. So you'll be having P5 so you can write P5 equals to P5 equals to 10C5 half to the power 5 again half to the power n minus x. n is 10 minus 5 मीन्स ये 5 ही आएगा. सिर्फ इसका वैल्यू निकालना है. सो इट विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. फिर इसका भी निकालो 1/32 आएगा. इसका भी 1/32 आएगा. व्हाट आर द चांसेस? मुझे रिजल्ट बताओ फाइनली. सिक्सटी 3/256 कितना है पॉइंट पे डेसिमल पे करो. मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ. 0.24. ओके. सो देयर इज ए 25% चांस दैट यू हैव 24% चांस यू हैव 5 कॉन्जिक्यूटिव एक्स. ऐसे बाइनोमियल हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. Now using this binomial distribution I'll be finding out the mean, I'll be finding out the variance. That formula I'll be deriving. लिखना चालू करो. How to calculate mean? How to calculate mean? Mean equals to EX. X equals to 0 to n x px. Okay, this is capital P. P means probability. So x equals to 0 to n. Okay, then you can write x. This one is ncx p to the power x q to the power n minus x. फ्रॉम द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मुझे ये मीन वैल्यू, ये पी एक्स का जो वैल्यू है इसको मैं रिप्लेस कर दिया. ओके, सो इसको मैं अगर लिखता हूँ x इक्वल्स टू 0 to n, आई विल बी हैविंग x इन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल n minus x फैक्टोरियल. एग्रीड. px q to the power n minus x. Now what I will be trying to do, I will be simplifying this statement, I will be simplifying this expression. How I can simplify this expression? कैसे करूँगा? I will be using, write this down, x equals to 0 to n x n factorial x into x minus 1 factorial. I can write 3 फैक्टोरियल का मीन्स क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1. ओके, सो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 इंटू 1 मीन्स 2 फैक्टोरियल होता है ना. n फैक्टोरियल्स मीन्स n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल. ये पढ़े हो कि नहीं? सेम थिंग वी आर डूइंग हेयर. सो वी आर डूइंग x को बाहर निकाल दिया, जैसे कि मैं इसको काट सकता हूँ. ठीक है, नॉलिफाई कर सकता हूँ. x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल. ऊपर हम लोगों का क्या है? वी हैव p, सिमिलर फैशन आई एम राइटिंग p इंटू p टू द पावर x माइनस 1
px, I can write always p into p or p to the power x minus 1. If you did not understand, let me know. And I'll be writing n minus x. n minus x I'll be writing this n minus 1 minus of x minus 1. ठीक है, अगर करते हो तो 1 कट जाएगा और n minus x हो जाएगा. So that I'm writing here that n minus 1 minus of x minus 1. This is q to the power x equals to 0 to n. इसको किया जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, x को काट देंगे, नलिफाई कर देंगे, and I am also writing p into p to the power x minus 1, q to the power n minus 1 x minus 1. I'm writing n minus x in this way. And this n factorial, what I can do, I can also write n factorial in the similar fashion, that I will be writing n factorial as n minus 1 factorial. If you didn't understand this part, just let me know. Actually, I am simplifying it according to my needs. According to my need, I am simplifying this. Okay. So in the next step, what I'll be doing, I'll be taking this n and this p as common. np x equals to 0 to n. Okay. So what we have here, n minus 1 factorial x minus 1 factorial n minus x factorial. Okay. p to the power x minus 1 q to the power n minus 1 x minus 1. Okay. अभी जो मैं ये टर्म लिखा हूँ, दिस टर्म एक्चुअली, इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फ्रॉम योर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है. इसको देखो, at first try to write this down, x plus y to the power n equals to nck. That portion you will be writing. Okay, that portion you will be writing, or let me write this down. From your school mathematics, x plus y to the power n equals to, here they have considered k equals to 0 to n, nck. Okay, x to the power n minus k, y to the power k. ठीक है ना. That means what we can write here, p plus q into the power minus 1. How we can write? How you can write summation. I'm not writing the summation value. n minus 1 c x p to the power x q to the power n minus 1 minus x minus 1. जो फॉर्मूला मैंने अभी x प्लस वाई टू द पावर n में डिस्कस कर रहे थे, सेम थिंग मीन्स मैंने क्या किया यहाँ पे, व्हाट आई डिड हियर, आई एक्चुअली रीअरेंज्ड माई और सिंप्लीफाइड माई एंटायर इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. आई हैव सिंप्लीफाइड द एंटायर इक्वेशन in this format so that I can write it as a p plus q to the power n minus 1. जिसको समझ में नहीं आएगा वो बोलेगा. If you didn't understand, just let me know. अभी बोलो. If you did not understand, just let me know. So I can write this is np multiplied with p plus q to the power n minus 1. Now class, tell me, I'm asking you, what is the value of p plus q? What is the value of p plus q? What is the value of p plus q? Tell me.
1. So this value will be 1. Then I'm having the mean value from the binomial distribution E equals to NP. Clear? Like this fashion I'll be solving. ये लिख लिए ना? Are you done with the writing and all? Class? Priyasmita, are you done with the writing? अखिल, अरे बोलो. Okay. तुम लोग इतने साइलेंट क्यों हो गए आज? समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब बोल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बोल सकते हो. सागनिक, आर यू हियर? सागनिक? Okay. Now let's solve, or let's find out what will be the variance, sigma square. Okay, so sigma x square can be written as E of x square minus E x whole square. शुरू में जो मैं डिस्कस किया था. टू फाइंड दिस वैल्यू, तो मुझे क्या वैल्यू मालूम है? ई एक्स का वैल्यू मुझे मालूम है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू. सो व्हाट आई हैव टू डू? ई एक्स वैल्यू वी नो दैट ई एक्स इक्वल्स टू एन पी. ई एक्स इक्वल्स टू एन पी. सो व्हाट आई विल डू हियर? आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस वन फर्स्ट. टू फाइंड आउट दिस, at first I will be find out the expectation of x into x minus 1. So what will be the expectation value? x into 0 to n from the binomial distribution x px. एक्सपेक्टेशन क्या होता है? x px होता है, फिर p का वैल्यू तुम चेंज करते हो. इन दिस केस व्हाट विल हैपन? इन दिस केस यू विल बी डूइंग, इन प्लेस ऑफ x यू विल बी पुटिंग x इंटू एक्स माइनस 1, बिकॉज मैंने यहाँ पे x की जगह पे x इंटू एक्स माइनस 1 लिया. इन प्लेस ऑफ x आई हैव टेकन x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 1. सो x इंटू एक्स माइनस 1, एंड व्हाट विल बी द p वैल्यू? इन सी एक्स p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x. ऐसा ही होता है. अगर किसी का एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ, अभी मैं इस टर्म के एक्सपेक्टेशन निकाल रहा हूँ. ठीक है. नाउ लेट्स डू x इक्वल्स टू 0 टू n x into x minus 1. I'll be writing this, simplifying this, n factorial x factorial n minus x factorial p to the power x. मैं कोई स्टेप जंप नहीं करूँगा. Okay. Now in this point I'll have a one objective like the mean calculation, that मुझे I have to nullify this term. मुझे इसको काटना है. ठीक है. इस term you are seeing I have to cross it out, I have to nullify it. So मैंने कैसे लिखूँगा? Any idea class? इसको अगर nullify करूँगा तो what will happen? How I can do it? Class? बोलो, अरे बोलो. Yes, x into x minus 1 into x minus 2 factorial into n minus x factorial. अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि कोई इसको मुझे काट देना है. ओके. एंड p to the power x q to the power n minus 6. ओके. तो आई गॉट द ऑप्शन एंड मैंने इसको नलिफाई कर दिया. फ्रॉम दिस पोर्शन व्हाट आई कैन राइट? सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट x इक्वल्स टू 0 टू n factorial divided by x minus 2 factorial. ओके. ये ज़्यादा डॉट पड़ गया यहाँ पे, इसको इग्नोर करो, इग्नोर दिस डॉट. So this is x minus 2 factorial, and
let's write this down as like the previous fashion, n minus 2 minus of x minus 2, क्योंकि मेरा एक धंधा है कि मुझे इसको p प्लस q टू द पावर समथिंग में लाना है, उसी ऑब्जेक्टिव में मैं चल रहा हूँ. I need to fulfill that goal so that I can simplify this statement, this expression. Okay, n minus 2 x minus 2, okay, factorial. Then we can write here, and I'm also writing that अभी तो समझ गए वो पैटर्न को कि मैं -2 कर रहा हूँ, तो इसको मैं -2 करना चाहता हूँ. So what I'll do, if I need to do p x minus 2, p square into p to the power x minus 2, okay, and this one मुझे वही सिमिलर फैशन फॉलो करूँगा like this way. So I'll be writing this as a q to the power n minus 2 minus of x minus 2. अब सब में अगर माइनस n minus 2 x minus 2 कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ को भी ऊपर वाले को भी this portion I'll also doing that fashion n multiplied with n minus 1 multiplied with n minus 2 factorial. Now what I can do here from this portion, that I can क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, मुझे थोड़ा हेल्प करो, क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ. टेल मी क्लास, क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ. n into n minus 1, okay, into p square भी कॉमन ले लिया. And another thing what I can so rest of the term will be, जो समेशन के अंदर रहेगा, मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, जगह भी नहीं है. So rest of the term will be p plus q to the power, क्या आएगा, what will be the पावर में क्या आएगा, क्या आएगा. ये जो इतना तामझाम किया मैंने, what does that mean? बोलो. n आएगा, n minus 1 आएगा, n minus 2 आएगा, कुछ भी आए इसका वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू. ओके, सो योर इज कमिंग अराउंड n इंटू n minus 1 इंटू p स्क्वायर. ये मुझे मिला, क्या मिला, e इंटू e x minus 1. सो नेक्स्ट पेज में मैं लिखता हूँ sigma x square equals to, we know, e x square minus of e x whole square. Okay, बट अभी तक मुझे मालूम है e x equals to n p, एंड और एक कैलकुलेट किया था e x into x minus 1, that's coming around n into n minus 1 p square. ये चीज़ें अभी तक मुझे मालूम है. नाउ ये ई एक्स का तो वैल्यू मुझे मालूम है, तो ये टर्म को लेके, दिस टर्म आई एम नॉट कंसीडरिंग दिस टर्म, और ये टर्म को लेके मेरा कोई टेंशन नहीं है, मुझे इसको निकालना है. सो टू फाइंड आउट ई एक्स स्क्वायर, व्हाट वी कैन डू, we can write ex into x minus 1, okay, plus ex. इसका मतलब क्या है, मैंने क्या किया मालूम है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर को क्या लिखा, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 ना प्लस एक्स, सॉरी प्लस एक्स. सो इसका अगर मैं एक्सपेक्टेशन लेता हूँ, सो ई ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, करेक्ट. ओके, एक्स स्क्वायर को अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ई और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद इन ब्रैकेट इक्वल्स टू
एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म ऑन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस टर्म, वही मैं किया हूँ, इसलिए पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लिया हूँ। इसका वैल्यू मुझे मालूम है, दिस इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस ex इक्वल्स टू इन p, so this will be n square p square प्लस क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस n, सो n स्क्वायर p स्क्वायर आएगा, फिर n p स्क्वायर आएगा, फिर n p आएगा, एंड व्हाट कैन आई डू फ्रॉम हियर, दैट आई कैन राइट n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस n p। मैंने यहाँ पे गलती किया, एक क्या गलती किया, किसी ने बोल भी नहीं रहा है, अरे बोला करो भाई। मुझे अब हिम्मत नहीं मिल रहा है कि कैसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊँगा, ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है, इसमें तुम लोग इतना साइलेंट हो गए तो ठीक है। n स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर प्लस एन पी, सो n स्क्वायर पी स्क्वायर में व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी टेकिंग ए कॉमन एन पी, आई हैव वन ऑब्जेक्टिव हियर, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग ए कॉमन n स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एन पी इंटू 1 माइनस पी। So e of x square here I can write n square p square plus np. What is 1 minus p? 1 minus small p q, so it is q। ये सारे जितना p यूज कर रहा हूँ ना यहाँ पे सारे स्मॉल p है ना, so e x square का वैल्यू है n square p square plus np q। Okay, now sigma x square equals to e x square minus e x whole square. It can be written as n square p square plus np q minus what is e x square, that is np whole square. So ये वाला टर्म कट जाएगा और you will be having np q. So sigma x square equals to np q. That is your variance. So what did you get from here, that expectation value is np, means the mean value is np and the variance will be npq. What will be the standard deviation here, what will be the hd, what will be the hd, what will be the standard deviation value here? How can you calculate standard deviation from variance? Yes. So square root of variance, your standard deviation is sigma x equals to npq. तो ये सब तो लिख लिए होंगे, और फॉर्मूलाज जो है ना इसको